जब हम भावना से, प्यार से, श्रद्धा से गोविंद नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारे मन में सुख की, विश्राम की, प्रेम की ये सुंदर भावनाएं जो है ये जागृत होती हैं. This has been now proven that when you sing in reverence, when you sing in love, then your body begins to secrete a hormone called oxytocin. And it begins to secrete a hormone called serotonin, which relaxes your nerves, calms your brain, calms your mind, and makes life more livable. We all have challenges in our life. We have to deal with those. We can't run away from that. But if we don't know how to sit down in peace, in silence, and manage our mind, then living becomes a challenge and living becomes a great, difficult stuff to do. इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सुबह में सबसे पहला काम यही की करें कि आप चुपचाप बैठें और कुछ अभ्यास अवश्य करें. मैं जब लोगों के जीवन में दुख या परेशानी या तकलीफ देखती हूँ तब एक ही बात समझ नहीं लगती है कि ऐसा क्यों जीवन वो जी रहे हैं, और फिर ये लगता है कि शायद कोई इन्हें सिखाने वाला मिला नहीं. अगर कोई मिलता सिखाने वाला तो मन को अपने नियंत्रण में रखना सहजता से हो जाता. Unfortunately, in your schools and universities and in all the educational institutions, nobody is talking about this. Nobody is giving you training about this. All academic info is given, but nothing about your own mind. And you are going to live your life with your mind, and then you end up suffering because of your own mind. So learn to mind your mind. If somebody interferes or suggests or gives his opinion without asking, we say, mind your business. Right? We say, mind your business. So that's what I'm saying to all of you. To cut down all nonsense from your life, learn to mind your business. The business of mind. Never fight with your mind. Never try to suppress your mind. But learn how to befriend this mind, and this mind will be such a great friend to you that you won't need actually any other human being as a friend then. That's what the truth is. But an untrained mind becomes your biggest enemy. It becomes your torturer. So if you really love your children, teach them how to mind the mind. If you are so worried about their food and clothing and schools, but actually you should be worrying about their mind. So a good parenting would be, which begins from training the mind. And making them clear about what the right ideal of the life is or should be. And it should never be a career, and it should never be money, should never be a job. This you will get in any case. Even duffers get a job. Even idiots get a job. Even a druggie and a junkie can make money. So what will give a good, clear definition to your child's life is when your child would learn to live without being dependent on anybody, and being so happy and fulfilled in itself that is able to serve
and give love and care to everybody who is around him or her. Now your study systems are making him how to be more greedy, how to compete, how to defeat others, so that you can score a point for yourself. So be a winner. हिंदी में कहावत है ना, मुकद्दर का सिकंदर बनो, और जो सिकंदर नहीं है तो वो बंदर होता है। तो जीतो, पर आप जीते इसके लिए किसी को हराना पड़ेगा ना, और जिसे आप हरा देंगे वो आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, वो आपसे दुश्मनी करेगा। पर हमारी सारी शिक्षा दीक्षा ऐसी ही हो रही है, जीतो, तुम्हारा जीतना जरूरी है, और फिर किसी को हराना पड़े, दिन बाय हुक और क्रुक, शाम दाम दंड भेद, तुम जीतो, और कोई हारता है तो हारे, पर तुम्हें नंबर 1 आना है। And whenever this number 1 game begins, this one child in a class of say 40 students, if he's aspiring to come as number 1, then he'll have to defeat 39 classmates, right? And these 39 classmates will make his life a hell. So anybody who is smarter, brighter and brilliant in school gets bullied more. So our systems are not very correct. Our systems don't allow every individual to have his or her own expression. And that's the reason for so much of agitation in young minds. Everybody wants to be number 1, not everybody will be number 1. और वो नंबर 1 की जो दौड़ है वो इतनी खतरनाक दौड़ है कि यही दौड़ तुम्हारी रातों की नींद ले जाती है। मैं कैसे हराऊं दूसरों को ताकि मैं जीत सकूं। जो जीत किसी को हरा के मिलती है वो जीत नहीं, वो भी एक हार होती है। ये ध्यान, ये ज्ञान, ये योग की ऊंचाइयां, ये किसके जीवन में आ सकती है? ये हर उस व्यक्ति के जीवन में आ सकती है जिसके जीवन में कोई सिखाने वाला अच्छा गुरु आ जाएगा, कोई अच्छा योगी आ जाएगा, जो कृपा करके अपने रहस्यों को अपने तक न रखे, जो अपने सब रहस्य धीरे धीरे मुझको देता चला जाए। जो आपने कमाया है वो आपका धन है, राइट? तुम तुम्हारा धन ऐसे ही किसी को दे दोगे? Whatever you earn, whatever money you have, which you have earned with your blood and sweat, would you just give it away without any reason to anybody? You won't. You won't. But a guru is a person who is ready to share his or her treasures to all those who are seeking it or who need it. And without any qualms, he just gives it away. The benevolence of the guru, the love of the guru, of sharing this knowledge with whosoever is seeking, is in such a great abundance that nobody can match the philanthropy of a guru. Because when somebody gives away money, it's just going to be physically comforting. But when somebody gives his or her wisdom and knowledge to, that's the real gift. Because if you have knowledge, you have everything. If you don't have knowledge, you don't have anything. Knowledge enriches you. Wisdom enriches you. ज्ञान है तो सब है, ज्ञान नहीं है तो याद रहे कुछ भी नहीं। ज्ञान है, समझ है, विवेक है तो सब कुछ है, और यही नहीं हो तो फिर क्या है? मैं एक बड़ी पुरानी कहानी पढ़ी थी कि एक गांव में शादी थी और लड़की वालों ने शर्त रखी कि देखें, आप जितनी चाहे बारात ला सकते हैं। पुराने ज़माने में शादी ऐसे होती थी कि 10-10 दिन बाराती आके लड़की वालों के यहाँ रहते थे, बड़ी लंबी शादी चलती थी।
अब लड़की वाले सोचते हैं अगर सारे बाराती लंबे समय रहे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने अपने संबंधियों के साथ बैठ के एक मीटिंग करी और मीटिंग में कहा कि अब इस मुसीबत से, ये जो बाराती आ रहे हैं, इस मुसीबत से हम कैसे बचें कि हमें ज़्यादा सेवा भी ना करनी पड़े, शादी भी जल्दी हो जाए और चले भी वो जल्दी जाएं और हमें तकलीफ भी ना हो। उनका एक काम करते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि हमारी शर्त ये है कि आपको रोज के 100 बकरे हम काट के खिलाएंगे और आपको खाने पड़ेंगे। दूसरा, आप अपनी बारात में किसी बुढ़े को नहीं लाएंगे। ये समझ लगी कि बुढ़ा नहीं लाएंगे, ये क्यों कह रहे हैं? और फिर 100 बकरे, इतने बकरे कौन खा सकता है? और वो कह रहे हैं कि एक ही दिन में एक ही समय में आपको खिलाएंगे, या आपको खाने पड़ेंगे, और अगर आपने नहीं खाए तो आपको दंड लगेगा। फिर बड़ी अजीब सी शर्त। बात आ गई अणी पर तो आदमी कुछ भी कर सकता है। लड़की वालों ने सोचा कि ये जो हमने रखे हैं ना शर्तें, तो ये कहेंगे कि भी बस हम आते हैं और आप ना बस शादी करो, हम तो तुरंत ही निकल जाते, हम तो जब रहेंगे ही नहीं तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो 100 बकरों की शर्त डराने के लिए थी। और बूढ़ा इसलिए मना किया कि बूढ़े लोगों के पास एक्सपीरियंस है, कोई ज्ञानी बूढ़ा आ गया तो कुछ तरीका ना बता दे, इसलिए बूढ़े नहीं ला सकते हो आप। लड़के वाले सोचते हैं कि भाई ये तो कोई बात ना हुई। लड़के ने अपने गुरुजी से बात करी। गुरुजी कहते, देख बेटा, बूढ़े ना ले जाओ, बात का मान रखो, तू मुझे ले चल, मैं ही चलता, पर थोड़ा छुपा के ले जाना मुझको, क्योंकि दाढ़ी तो मेरी भी सफेद है, पर चूंकि हम गुरुजी हैं इसलिए नो प्रॉब्लम, मैं चलता हूं, पर थोड़ा छुपा के ले चल। जब वो वहां गए और बोले अब ये शर्तें हैं, ये सब का क्या करें? कहते उनको आप बोलो कि आपके 100 बकरे की शर्तों में मंजूर है, लेकिन एक समय में एक ही बकरा कटेगा और सब बारातियों में बटेगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब आप सोचिए 500 बंदे की बारात हो, एक बकरा कटा हो, एक के हिस्से में क्या आएगा? बल्कि थोड़ा सा खा के उसकी भूख और बढ़ जाएगी। तो दूसरा, और तो तीसरा, तो चौथा, तो पांचवा, तो कितने क्या 100 भी ज्यादा नहीं रह जाएंगे। लड़की वाले पूछते हैं, तुम्हारे साथ कोई बुढ़ा आया है क्या? बोले जी नहीं, आपने कहा था कोई बुढ़ा ना आए, एक भी बुढ़ा नहीं आया। यहां जितने बुजुर्ग बैठे हैं और जितने उनके बच्चे बैठे हैं, ध्यान रखना बुढ़े बड़े काम के होते, बुढ़े बहुत काम के होते, क्योंकि बूढ़े आदमी के पास ज्ञान होना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूं। और बूढ़ा होना सिर्फ शरीर की उम्र से रिलेटेड नहीं होता है, बूढ़ा होने का मतलब उसका एक्सपीरियंस होता है, उसके अनुभव होते। गुरु वो बूढ़ा है जिसके पास सबसे सुंदर ज्ञान का खजाना होता है, और गुरु वो दाता होता है जो अपने सब अनुभवों को हमारे लिए खोल देता है, बिना किसी मोल, बिना किसी कीमत, बिना किसी दाम के। वो कुछ मांगता नहीं है, वो सिर्फ देता है। आजकल वैसे गुरु शब्द बड़ा विवादित हो गया है। The guru word in itself has become really controversial, because we have these strange kind of individuals who are called a guru and who one day turn out to be not a guru, and they turn out to be as ordinary and maybe sometimes lesser ordinary than even a common person. So sometimes people really have this tendency to paint all the donkeys and the horses in one color, and they say all are like one only. But that's not true. Kabir Sahib gave a beautiful example. Who is a guru? And he said, one who is not seeking anything from you, but gives away his heart and his treasures to the disciple is a guru.
But in these days, what we find is that they are so ready to amass your wealth and power from you, and in return, that just gives you false hopes and nothing real, and no wisdom and no knowledge. So if you are mistaken to see a non-guru as a guru, then that's your problem. And that guy was just playing smart and taking you as a ride because you were stupid. Who is a guru? The one who doesn't expect or demands or ask anything of you, and especially material world, meaning money or power or something. And the one who is asking or expecting something from you can't be a true guru, cannot be. So who is a guru? Who is a giver? Who is a guru? Who loves you unconditionally. Not because you are the best, but because he sees the best possibilities in you. मैं अच्छा हूं इसलिए वो मुझे प्यार करे, नहीं नहीं, मैं तो अच्छा नहीं हूं, पर मेरे अंदर के उस दिव्यता को, उस भगवत्ता को गुरु जानता है और गुरु समझता है कि जैसे कभी मैं साधारण था और गुरु की कृपा से आज यहाँ पहुँचा हूँ, ऐसे ये जो मेरे सामने बैठा है दिखता तो साधारण है, पर एक दिन ये भी बहुत श्रेष्ठ, बहुत महान हो सकता है। तो मेरे अंदर की महानता को जो देखता है और मेरे से ये सिर्फ एक उम्मीद करता है कि तुम अपने आप को और ऊंचा उठाओ, ऐसे गुरु का जीवन में आना इस बात की कन्फर्मेशन हो जाएगा कि अब आपकी जीवन यात्रा बहुत सुंदर होने वाली।